Morning student, today we are going to start our next topic which is in continuation with the Bohr's atomic model, okay, that is the hydrogen spectrum. ठीक है, तो we will discuss about today the what is hydrogen spectrum and what are the lines comes in hydrogen spectrum. Okay, so first let's start with the hydrogen spectrum. So if we have a chamber and in this chamber we have a hydrogen gas. Hydrogen spectrum. Okay, I told you what is spectrum. Okay, now if we have a chamber and in this chamber there is a what? Hydrogen gas. Hydrogen gas. ओके तो ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, इसमें आपने टर्मिनल्स लगा दिए, आयोनाइज कर दिए इसको, आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. ठीक है, हीट करने के बाद अगर आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलती है, लाइंस मिलती है. आई टोल्ड यू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये आपको क्या देता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है. गॉट इट. तो ये सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बताया. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ ईच लाइन इन दिस स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट वन ट्रांजिशन. ईच लाइन, इसको आप पॉइंट्स में लिख लो. नंबर 1 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. Okay, and each line represent one transition. Okay, transition मतलब from one principal quantum number to next quantum number, from n1 to n2, n2 to n3, like this transition. Clear? Number 2, the reasons. आपको पता है ये जो आपको लाइंस मिल रही है आपको अलग अलग रीजंस में मिल रही है. तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर वी डिस्कस अबाउट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशंस एंड वी टॉक अबाउट रेडियो वेव्स, वी टॉक अबाउट इंफ्रारेड रेज. ये सारी रेज आपके होंगे. तो उन रीजंस के अंदर आपको ये अलग अलग लाइंस, दीज लाइंस प्रेजेंट इन Okay student, let's start with the new topic which is continuation with their Bohr's atomic model, and that is hydrogen spectrum. Okay, hydrogen spectrum. Now if you have a hydrogen spectrum, means hydrogen, we will take a hydrogen molecule. So if we have a chamber, if you put hydrogen gas here and you पॉजिटिव एनोड, कैथोड, आयोनाइज करना है आपको इसको एंड हीट इट, तो यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम. ओके, एंड द स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम. तो ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम देता है आपको. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लाइंस हियर. ईच लाइंस बेसिकली व्हाट आर दीज. नंबर 1 आपको याद रखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम is a line spectrum. Okay, number 2 क्या है, each line in spectrum represent a series. Okay, or you can say transition. Okay, and number 3 that is important, these lines are
produce in different region, okay, according to wavelength, according to the wavelength, okay। तो हर एक लाइन का अपना एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा और उस पर्टिकुलर रीजन की जो वेवलेंथ होगी वो भी डिफरेंशिएट होगी, एक दूसरे से वो अलग होंगे, ठीक है। नाउ if we have a hydrogen spectrum and if you want to tell how many spectral lines are possible in hydrogen spectrum, so number 4th you can write here, there are 6, okay, there are 6 spectral series, ठीक है, possible। एंड ठीक है, उनके अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि वो स्पेक्ट्रल सीरीज के है क्या आपके पास। तो स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट हाउ मेनी सीरीज, 6 सीरीज। नाउ वी विल मेक अ टेबल फॉर दैट। नंबर 1 सीरियल नंबर, नेम, ओके, एंड देन N1 वैल्यू, ठीक है। N1 वैल्यू इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट यू कैन से इनर ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, कैन राइट हियर इनर ऑर्बिट वैल्यू, एंड देन N2, N2 इज इक्वल टू N2 सॉरी N1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। एंड देन द रीजन, किस in which region they found. Now number 1 is Le Mans series, Le Mans. Number 2 Balmer. Number 3 Bastian. Okay, number 4 Bracket. Number 5 Fund series, and number 6, which is not given in your NCERT book, that is Humphrey. That is Humphrey. Okay. Now, if you talk about the N1 level here in Le Mans series, N1 level means this one, first energy level, inner level, that is 1. In Balmer, that is 2. In Bastian, that is 3. Bracket 4. Fund 5, Humphrey 6. So these are the ground or the inner orbit level. So if you talk about the outer orbit level, they will be what, 2, 3, 4, so on. Because here that is N1 plus 1. Here 3, 4, 5. 4, 5, 6. Always the N2 value is greater than N1 value. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Okay, 7, 8, 9. In this way you will write N2 values. Now what are the reasons according to the wavelength where these series are present? If you talk about Le Mans series, Le Mans series present in UV. UV means ultra violet region. Okay, तो ultra violet region में आपको ये Le Mans series मिलेगा. If you talk about Balmer series you will get in visible region. Visible, okay. And if you talk about Bastian series, this Bastian series you will get near infrared. So in your textbook they written here infrared only, but we will magnifying here near infrared. Okay, near infrared, and these two in infrared region. Okay, and the last one is in far infrared. Far infrared region. Okay, I hope you understanding what we are trying to say here. So let's revise in 2 seconds.
So first of all, hydrogen spectrum is a line spectrum. Each line represents a transition, and the hydrogen spectrum consists how many possible lines, series, or right here series, 6. Okay, and these 6 are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, first one is Lemon, second is Balmer, third one is Paschen, Brackett, Pfund, and Humphrey. According to these series have first orbit level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then the outer orbit level, or the higher, right here, higher orbit or outer orbit you can write here. Okay, outer orbit. And these are the regions where these particular series present. Like if you talk about Lemon series, ultraviolet, Balmer, visible, Paschen, near infrared, Brackett, Pfund, infrared. Okay, and if you talk about Humphrey, that is in far infrared region. Now let's move to the formula. We will write down the formula now, which is given by Rydberg scientist, and with a particular value in centimeter inverse. Now let's start with the Balmer formula. So this formula basically used to calculate V bar. Okay, I will tell you what is V bar. We already explained what is V bar in early classes. Then 109677, that is your Rydberg constant value, and then N1, 1 upon N1. N1 in Balmer series is 2. Okay, this is the first orbit. So we will write here 2 square minus N2 square, N2 your higher levels square, and then centimeter inverse. So that is your Balmer formula. So if you want to write general Rydberg formula, that is V bar is equal to R, Rydberg value 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, centimeter inverse. Okay, so that is your Rydberg constant having a value 109677 centimeter inverse. Okay, and what is that? That is your wave number. Okay, I told you what is wave number. Okay, the number of waves generated in per unit second, per unit area, that is your wave number. Got it? I hope you understanding what is Balmer formula and what is Rydberg formula. So we will do one question on that, and then you will be able to understand what we are trying to say here. In this formula we have Z value also here, but we are not taking here because Z atomic number of hydrogen is 1 only. So we can write in general formula, that is R into Z square. So in hydrogen spectrum we know hydrogen atomic number is 1, so it will come 1 only. Okay, so that's why we written here R only. Now let's do some questions which are based on calculation spectral lines. How many number of spectral lines you can record? Okay, so let's do 2-3 questions on that. Calculate number of spectral lines, okay, recorded when electron jumps from 5th orbit to ground state. 5th orbit to ground state. Got it? So there are two things are important. First is the 5th orbit and the second one is the ground state. Okay. So there is a formula to calculate the spectral lines here. It's a direct formula. Number of, I will tell you both the way, number of spectral lines
दैट इज इक्वल टू, इज बेसिकली गिविंग द नंबर, जो आपका मिनिमम नंबर रहेगा, समेशन n2 माइनस n1. तो हियर n2 is what? The higher level is fifth orbit, so we will put 5 here, and ground state level is what? 1, so it will give a value 4. ठीक है, तो समेशन करना है. समेशन का मतलब 4 से हमें स्टार्ट करना है. 4 तो रहेगा प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा ये? दैट इज 10. तो दिस इज योर आंसर. स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी योर 10. ठीक है, आई एम टेल यू के हाउ इट इज बी गोइंग, बिकॉज समेशन साइन का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा. ठीक है, जैसे कि इफ वी हैव 1 2 3 4 एंड देन 5, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे है, 5th लेवल पे है. 1 2 3 4 एंड देन 5. ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन ये 5th पे है, तो इसको ट्रांजिशन के लिए अंदर आना है, अंदर की तरफ आना है. तो कितनी पॉसिबिलिटी? 5th इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4, तो दैट इज योर 4 नंबर. ओके, तो 5th शेल के लिए 4, nth 5 के लिए कितने पॉसिबल हो गए? 4. अगर मेरे पास 4th इलेक्ट्रॉन होगा, 4th शेल वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए 3rd 2nd 1st, तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है? 3. 3rd के लिए 2 के लिए 1 और 1 के लिए 0, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांजिशन तो अंदर की तरफ करेंगे नहीं हम लोग, न्यूक्लियस में तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए 0 ट्रांजिशन रहेगा. ठीक है, तो 4 + 3 7 9 + 1 10. तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो calculate how many spectral lines can be possible if we have a transition from 5th orbit to the ground state. Now let's do one question based on Balmer series. इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. ठीक है, व्हाट इज द चेंज? रिकॉर्डेड इन, वी विल राइट हियर इन Balmer series when electron jump from 5th to ground state. इसका क्या मतलब है? अब इसको कैसे समझेंगे? इन्होंने बोला है 5th Balmer series. अब Balmer series का you know what is n1. In Balmer series I just explained you, in Balmer series n1 is 2. तो दिस n1 इज योर ग्राउंड लेवल हो गया. क्लियर बेटा? दैट इज योर फर्स्ट ऑर्बिट यू विल कंसिडर. तो वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, दैट इज समेशन n2 माइनस n1, समेशन n2. 5th अगेन इट इज 5th माइनस, व्हाट इज n1? We talking about, again repeating, we are talking about here Balmer series. So in Balmer series n1 value is 2, so we will write here 2, so that is 3. So we will start from 3rd. Okay, 3. तो 3 के लिए कितना होगा? 2 के लिए कितना होगा? 1 and 1 के लिए कितना होगा? 0. तो यहाँ पे कितना आ गया? 3. Okay, तो how many spectral lines possible? 3. तो 3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, थ्री स्पेक्ट्रल लाइन्स. ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे. यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो. ये आपका समेशन का वैल्यू है. समेशन के वैल्यू के अकॉर्डिंगली 3rd के लिए 2 पॉसिबल है, 2 के लिए 1, 1 के लिए 0, 2 + 1 3. So that is your answer. Our next topic is the limitation of Bohr's atomic model. Limitations of Bohr's atomic model. Bohr's atomic
atomic model. Okay, now the first limitation is can explain only single electron system. ठीक है, I told you the Bohr's model only explains single electron system. This is all the limitation itself. ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैलिड है. नंबर 2, the Zeeman effect. Okay, that is Zeeman effect. What is that? Splitting of line of spectrum in the presence of magnetic field. How they splits. That is your Zeeman effect. Zeeman is the scientist, basically presence of magnetic effect, magnetic field. Okay, the third one is your Stark's effect. Stark effect is the same, splitting of the lines of spectrum, but this time in the presence of electric field. Splitting of line, we will discuss this in further chapters. Spectrum in the presence of electric field. In the presence of electric field. Got it? And number 4th, which is very important, de Broglie hypothesis. De Broglie, dual nature of matter की बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे. De Broglie hypothesis. Okay, de Broglie hypothesis. And the number 5th is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. So these are the 5 limitations of Bohr's atomic model which cannot explain by the model. First one is can explain only single electron system. If we have multi-electron system, it will not able to explain. Number 2, the Zeeman effect. It is what? The splitting of lines of spectrum. ठीक है, जो आपके पास line spectrum है, how they will split. ठीक है, in the presence of which field? Magnetic field. And the Stark effect. बेटा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Zeeman effect भी और Stark effect भी. तो you always remember, if the splitting of line of spectrum in the presence of electric field, that will be your Stark effect. In the presence of magnetic field, that will be your Zeeman effect. And it is these two are the limitations of Bohr's atomic model. Okay. The 4th one is the de Broglie hypothesis. It's basically a formula. If we have an electron in motion, then if you want to calculate the wavelength of the system by using these de Broglie equation, we will able to calculate the wavelength and the Heisenberg uncertainty principle. So we will move now de Broglie hypothesis. What de Broglie hypothesis states that. Okay. Now let's start with de Broglie hypothesis. ओके, तो ये आपके पास, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं. वी विल डिराइव दैट ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव अ इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, तो दिस इलेक्ट्रॉन in a motion will behave as a wave. Okay, so we will write here each particle, ठीक है, is associated with the wave nature
with the wave nature at the time of motion. ठीक है, तो जब भी उसके पास मोशन होगा तो उसके पास वेव नेचर होगा. ठीक है, एंड इन दैट केस if you want to calculate the wavelength can be calculated by using this equation. ठीक है, that is called de Broglie equation. And what is that equation? बताइए. You can write here also moving particle like we are talking about here electron. Okay, electron. Got it? So that is the formula. Lambda is equal to h over mv. Okay, and h over p. Now p is the momentum. Who is the momentum? h is your Planck's constant. Planck quantum theory में पढ़ा हमने Planck constant. Okay, so we will put the same value whatever we put in earlier. And what is m? m is equal to mass of the object. जो भी आप पार्टिकल ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास, पार्टिकल है, पार्टिकल का मास. ठीक है, v is the velocity. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर p इज इक्वल टू mv. ठीक है, तो यहां पे तो हमने सीक्वेंसली लिख दिया है. तो हाउ यू विल डिराइव दिस रिलेशन? ठीक है, दिस इक्वेशन बेसिकली डिराइव बाय समेशन ऑफ टू इक्वेशंस. दैट इज फर्स्ट वन इज आइंस्टाइन इक्वेशन. ठीक है, और एक और पढ़ी है हमने, दूसरी कौन सी, अगर आपको याद हो तो, वेलोसिटी वाली. v इज इक्वल टू, ओके, इस इक्वेशन को करने के लिए हम कैसे डिराइव करेंगे इसको? आइंस्टाइन इक्वेशन. दैट इज e इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ओके, एंड सेकेंड इज द एनर्जी. पार्टिकल अगर आपके पास है तो उसके पास फोटोन एनर्जी होता है. वन फोटोन एनर्जी वाला फॉर्मूला h इज इक्वल टू v. तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर रहे हैं. e की वैल्यू क्या है? mc स्क्वायर एंड देन hv. hv क्या है बेटा आपके पास? दैट इज c अपॉन लैम्डा एंड mc स्क्वायर. c से आपने ये c कैंसिल कर दिया. ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया आपके पास? c इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc. ठीक है, दैट इज व्हाट योर स्पीड. So you can write c or v here. Got it? So you're just taking here c is equal to v in this formula. Let's do one question based on de Broglie equation. Calculate the wavelength. ठीक है, of the ball. बॉल का मास कितना है बेटा? 100 ग्राम with a velocity of 100 meter second per second. Okay, so you have to calculate the wavelength. So whenever you do the question, just write the given values first. Given. In given, you have m value. M is 100 gram. So this 100 gram is 0.1 kg. Okay, we will convert that value in kg. And if you talk about velocity, you can take meter per second here. This meter per second. Okay, and then formula used. What formula you will use to calculate the wavelength? Okay, that is lambda is equal to h over mv.
So what is the value of h? Planck constant, that is 6.6 into 10 to the power minus 34. So you, and then mass is 0.1 and velocity is 100. Okay, तो इसको आप सोल्व करेंगे, इतना आएगा, that is 6.6, and then if you go power up and then 10 to the power 2 हो गया ये, 10 to the power minus 34 into 10 to the power 2, तो 66 into 10 to the power minus 32. ओके, अगर आपको इसको अगेन पॉइंट में लिखना है, दैट इज minus 36, तो आपको पॉइंट में लिखना है, तो 6.6 into 10 to the power minus 35. That is your, got it? So you have 2-3 numericals in your NCERT book, so just go through that and you will be able to understand what is the concept of de Broglie hypothesis.